Dear students, today we are taking up another poem, A Thing of Beauty. A Thing of Beauty is one of the masterpieces of John Keats' poems. John Keats, who lived a very short life of 26 years, and he was a British poet. He is famous for his romantic poetry. So, this poem is an extract from his poem Endymion, which is a poetic romance. The poem is based on a Greek legend in which Endymion is a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Latmos, had a vision of Cynthia, the moon goddess. The enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea. And this poem, A Thing of Beauty. So, I will read it out for you. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dearth, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching gaze. In spite of all, some shape of beauty moves away the pall. From the dark spirits such the sun, the moon, trees old and young sprouting a shady boon. For simple sheep and such are daffodils, with the green world they live in, and clear rills, and that for themselves a cooling covert make. Against the hot season the mid-forest brake, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of their dooms we have imagined for the mighty dead. All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven's brink. So, this poem, in this poem, the poet advocates the essence of beauty and the joy which provides a small or an unimportant looking thing, a beautiful looking thing which provides us the joy, everlasting joy. So, the poet says that the loveliness of a beautiful thing never fades. We find in it new beauties as we watch it day after day. It never passes into nothingness. So, before going to the extract-wise understanding of the poem, let us say some of the difficult words. First, the central idea. The central idea of this poem is beautiful things give us joy and make us forget the sorrows and sufferings of the world. So, some of the difficult words and phrases which we shall understand before going to the poem. Pass into nothingness. Pass into nothingness means lose its being, come to nothing. Bower, a shady place under trees. दरख्तों के यानी कि उनके दरख्तों के झुंड के नीचे जो साया होता है उसको बावर कहते हैं. Quiet, breathing, peace, tranquility, scone. Morrow, the next day or the following day. Rethink,
Flowers fastened in a ring used for decoration or for placing on a grave, and another meaning is covering. तो फूलों की एक माला जो एक गोलाई में बनी जाती है, तो वो तो या तो डेकोरेशन के लिए तैयार किए जाते हैं या फिर कब्रों पर उन्हें नजराने के तौर पर रखा जाता है. A flowery band, a strip of flowers, यानी कि फूलों का एक गुच्छा या पट्टा फूलों का. Spite of despondence, in spite of loss of hope, यानी नाउमीदी के बावजूद. Dearth, a lack or inadequate amount of something, shortage, यानी किसी चीज़ की कमी. Pall, a cloth spread over a coffin, यानी कफन के ऊपर, ताबूत के ऊपर जो कपड़ा डाला जाता है उसे पाल कहा जाता है. Dark spirits, sad or dejected heart, यानी मायूस और गमगीन मगमूम दिल, अशखास. Boon means helpful or beneficial. boon का मतलब है फ़ायदेमंद या मददगार. Rills, small streams, छोटी छोटी नदियाँ. Cooling cover, area of thick low bushes or trees among which animals can hide, यानी झाड़ियों के नीचे के घनी झाड़ियाँ या दरख्तों का झुंड जहाँ पर जो हैवानात हैं, जानवर हैं, मवेशी हैं, वो अपने आप को वहाँ पर महफूज कर लेते हैं या वहाँ पर साया उन्हें मैसर होता है. फॉरेस्ट ब्रेक, marshy land thickly overgrown with one kind of plants. फॉरेस्ट ब्रेक कहते हैं दलदली ज़मीन और जहाँ पर बहुत ज़्यादा मकदार में किसी एक ख़ास किस्म के पेड़ पौधे उगते हैं. मस्क रोज़, a type of rose with large white flowers. मस्क रोज़ एक किस्म का गुलाब है जिसके बड़े सफ़ेद गुलाब खिलते हैं. ब्लूम्स, फ्लावर्स, ब्लूम्स का मतलब है फ्लावर्स. डूम्स, डूम कहते हैं द डे ऑफ जजमेंट, और यहाँ पर डूम्स जो है गॉड्स फाइनल जजमेंट्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स, यानी इंसानों का जो आखिरी फ़ैसला होगा, जो अल्लाह के सामने जब वो हाजिर होंगे तो वहाँ पर जो आखिरी फ़ैसला उनके हक़ में किया जाएगा उसी को डोम्स कहते हैं. The mighty dead, the great and powerful men of the world, कि जो बहुत ही ताकतवर इंसान गुजरे हैं दुनिया के. Immortal drink, nectar. Nectar means the drink of gods, a drink that gives heavenly joy, जो हमें रूहानी तस्कीन पहुंचाता है वो शरबत. Heaven's brink, the extreme edge of heaven. Heaven's brink का मतलब है कि जो कायनात है उसका जो रूहानियत है, जहाँ पर उसकी सरहद, उसकी हद, एक्सट्रीम एज ऑफ दिस हेवन, यानी कि इस कायनात का. So, in the first stanza, a thing of beauty is a joy forever, up to full of sweet dreams and health and quiet breathing. The poet says that a thing of beauty can give us an everlasting joy. An everlasting joy. Its loveliness never fades from our imagination. Rather, it increases because our imagination adds new colors to it. It never passes into nothingness. यानी ये न ख़त्म होने वाली चीज़ है. It always remains fresh in our memory. It serves the purpose of a quiet bower for us. यानी बावर का मतलब जो हमने देखा है shady place under trees, तो ये खुशी यानी जिससे हमें मसरत मिलती है वो चीज़, तो ये हमें
उसी तरह सुकून पहुंचाती है जिस तरह दरख्तों का झुंड हमें गर्मी के मौसम में राहत पहुंचाता है. We can move into this power whenever we like. In other words, in moments of sadness, we can recall the beauty of that object and be happy again. तो हम इस सुकून भरी जगह पर किसी भी वक्त दाखिल हो सकते हैं. शायर का मानना है कि हम कभी भी हम इस जो थिंग ऑफ ब्यूटी है इसे याद करके हम उन पुरस्कून लम्हात में वापस जा सकते हैं. Its memory will lead us to a gentle sleep full of sweet dreams. It will keep us healthy and give us all peace. तो इसका ख्याल ही हमें एक मशहूर कुन यानी जो हमारे ख्यालात हैं, ख्वाब हैं, वो आएंगे और हमें ये हमेशा एक सुकून फराहम करेगी. Then we have, therefore, on every morrow, up to from our dark spirits, तो यहाँ तक. तो इसमें क्या है कि here the poet says that it is beauty alone that keeps us going on this earth. यानी जो खूबसूरती है यही हमें मुतहरिक रखती है इस दुनिया में, मुतहरिक रखती है. और इस दुनिया में ब्यूटी इज़ ए काइंड ऑफ फ्लावरी बैंड दैट बाइंड अस टू दिस अर्थ. ये वही एक हाला है फूलों का जिससे ये हमें जुड़े रखता है ज़मीन से. इट इज़ ब्यूटी दैट कीप्स अस मूविंग फ्रॉम वन डे टू द नेक्स्ट डे. यही खूबसूरती हमें एक दिन से दूसरे दिन की तरफ सफ़र करने में मददगार है. देयर इज़ सो मच टू ग्रीव इन द वर्ल्ड दैट फॉर ब्यूटी इट वुड बी इम्पॉसिबल टू लिव हियर. इस दुनिया में, शायर कहता है, इस दुनिया में बहुत सारे गम हैं, मसाइब हैं, लेकिन अगर यहाँ खूबसूरती ना होती तो शायद जीना महाल होता. There is depression and dejection all around. There are very few people who have a really noble heart. Man's life is all gloomy. There are many mysterious happenings that man fails to understand in spite of all his attempts. तो यहाँ पर हर तरफ मायूसी है, मगमूम है इंसान की ज़िंदगी. तो उसके इंसान बहुत सारी चीज़ों को समझने से कासिर है. But in spite of all these unhappy things, man continues to live on this earth. The poet says that it is only because there are some beautiful things also in the world. It is the beauty of these objects that takes away the gloom from our sad hearts. तो यही है, यही खुशियों भरी चीज़ें जो हैं अल्लाह ने तख्लीक की हैं. तो यही हमारे दिल से वो मगमूमियत, वो गम, वो परेशानियां दूर करने में मुआविन साबित होती हैं. So then we have such the sun, the moon, trees old and young, up to rose blooms, musk rose blooms. So in this stanza, the poet talks about some beautiful things in the world. यानी कि बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों के बारे में वो बयान करता है. Here the poet lists some of the beautiful things that add some charm to the otherwise sad life on this earth. He says that there are the beautiful sun, the moon, there are big and small trees that give pleasant shade for the gentle sheep. There are the lovely daffodils with all the green world in which they live. तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं जिनसे इंसान को मसरत हासिल होती है. There are clear streams that make cooling coverts along their course to protect themselves from the hot season. तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो नदियाँ हैं, खूबसूरत नदियाँ हैं जो जिनके इर्द गिर्द ऐसे पेड़ पौधे उगते हैं जिनके नीचे हम इंसान या हैवानात सुकून की घड़ियाँ यानी कि राहत की घड़ियाँ गर्मियों में हासिल करते हैं उनके साए के नीचे. Then there are low-lying plants in the middle of the forest with the lovely white roses growing among them here and there. और गुलाब के फूल हैं, फूलों के पेड़, छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो हमें खूबसूरत नज़ारा हमें पेश करते हैं हमारे सामने. तो उसके बाद है लास्ट स्टैंजा जिसमें है, तो
And such too is the grandeur of this after the pouring unto us from the heaven's brink. तो लास्ट स्टैंजा में जो शायर है वो हमें ये बताने की कोशिश करता है कि ये खूबसूरत चीज़ है हमारे लिए किस तरह से, यानी कि अल्लाह ने हमारे लिए किस तरह से ये इंतज़ाम कर रखा है कि हमें इन खूबसूरत चीज़ों से किस तरह से राहत पहुंचती है. तो कंटिन्यूइंग विद हिज लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स द पोएट says that we imagine magnificent rewards by God on the day of judgment for those mighty men of the world. यानी अल्लाह जब अपना निज़ाम अदल कायम करेगा तो उस दिन हम ये चाहते हैं कि जो अजीम लोग गुज़रे हैं उनके लिए इनामात होंगे अल्लाह की जानिब से. तो we think of those grand rewards and are filled with happiness. Then there are lovely tales of olden days that we have heard or read. The poet calls all these beauties an endless fountain of immortal drink that heaven itself is pouring down for us. In other words, God Himself has created these beautiful things for us so that we can derive joy from them during our life on this earth. They can give us as much joy as angels derive from the immortal drink of heaven. तो इस लास्ट स्टैंजा में शायर हमें ये बताने की कोशिश करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तमाम चीज़ें गॉड ने हमारे लिए क्रिएट की हैं, ये खूबसूरत चीज़ें, ताकि ये दुनिया की ये जो आलाम मसाइब ज़िंदगी है इसमें खुशी और राहत हमें मिल पाए. उसी तरह जिस तरह फरिश्तों को यानी कि उस रूहानी शरबत से जो उनको मैसर है उससे खुशी महसूस होती है, उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी हमें हमारे लिए इन खूबसूरत चीज़ों को तख्लीक किया है. सो इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट द ब्यूटीफुल थिंग्स and he discusses lots of beautiful things, and then he says that there are many we imagine what we imagine, and in our imagination हम भी ये महसूस करते हैं कि हमारे लिए भी ऐसे इनामात मैसर होंगे. तो दिस इज़ ऑल. थैंक यू.